I can start now? Okay. So 3-4 चीज याद रखो कि जोन आपका अगर स्टेट प्रेफरेंस है, ठीक है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया मोर और लेस, तो जो स्टेट प्रेफरेंस है यू कैन पुट दैट एज योर जोन 1, दैट इज सिंपलेस्ट वन. एंड because of the distance factor and because of the language culture aspects, you can put southern India last and northeast last. जिसका southern India preference है, home state है, you can go for that zone as well. तो उसमें आपका कम से कम 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. If you belong to the UP उत्तरांचल वाला बेल्ट, जो नंबर 1 हो गया. Northeast zone 4 is last choice and the southern state could be your last but one choice. If you belong to southern state, the southern state is choice number 1, okay, and your northeast could be choice number 5, and the बाकी बीच में आ गया. So that's one. Second, in every zone, okay, certain states, now the preference within the states will depend on 3 factors. एक तो आपका home state डाल लो number 1, if that's what all of you preferring home state, I believe. आप क्या prefer करना चाह रहे हो? महाराष्ट्र. ठीक है, ठीक है, देन यूपी इज योर. आपको तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. जोन यूपी वाला फर्स्ट चॉइस हो गया, महाराष्ट्र सेकंड चॉइस हो गया. They will not give Maharashtra if I am not getting. Yeah, that's okay. But I'm saying if you have to choose, Maharashtra second zone डाल देना. फिर हर जोन में you can choose the bordering states as your first choice, जो आपसे पास है. जैसे कि अगर आप दिल्ली से हो, then हरियाणा could be your second choice. Okay, maybe hill states could be a last 1 or 2 choices. ऐसे कर सकते हो आप लोग. अगर आप उत्तरांचल से हो, then उत्तरांचल can be your first choice. Okay, उत्तरांचल first choice हो गया, हिमाचल प्रदेश second choice हो गया. Accordingly, UP can become the next choice. ठीक है, so जो home state है, that is your zone preference 1, and in the zone state, in the zone, whatever bordering states आपको लग रहा है comfortable, go with that. But 6 states are relatively more exciting to work. Because let's be honest here, why are you guys doing all this preparation? आप लोगों को पावर चाहिए, ठीक है. फैक्ट वही है, you want to have the recognition in terms of social status also, वो भी important criteria है. And you definitely want कि you should be given a more diverse range of jobs, ठीक है. So keep these things in mind. What drives you most? जैसे कि अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में लिखा भी है कि इफ यू कम फ्रॉम दैट टाइप ऑफ अ माइंडसेट, द फ्यूडल माइंडसेट है थोड़ा बहुत, एंड वेरी यूपी बिहार में पीपल लिटरली वर्शिप यू, ठीक है. वो उसका कौन ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर इज क्रेजी, तो पैकेज के साथ आता है. ओके, बट इफ यू गो टू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र हो, केरल हो, यहां पर थिंग्स आर रिलेटिवली मोर प्रोसेस ड्रिवन. इवन गुजरात में ओके, इट इज प्रोसेस ड्रिवन, तो वहां पर उतना सोशल एडुलेशन शायद नहीं होगा, बट वर्किंग एनवायरमेंट इज वेरी गुड. Okay, so I'm taking it one by one for your convenience. So this choice has to be yours. This again in zone 1. Okay, in zone 1, Delhi is a good place to be in. Agmed cadre, good place, but again the problem is यहाँ पर everybody is somebody. Okay, so the list of pecking order hierarchy में आपकी औकात बनने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको. And the pressure will definitely be there because you're sitting actually right under the power center के nose के अंदर में, तो आप प्रेशर तो रहेगा. And everybody is powerful here, so you are in the pecking order. आप लास्ट में pecking order में हो. Otherwise, Agmed is good. Haryana has come up very well because गुड़गांव है, फरीदाबाद. I mean, bulk of the economy of Haryana तो गुड़गांव और फरीदाबाद से ही आता है, राइट. एंड दिल्ली का एडवांटेज है. सो योर प्रेफरेंस कुड बी इन टर्म्स ऑफ एगमट, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इज अ गुड प्लेस टू वर्क इन. रिलेटिवली मोर प्रोसेस ड्रिवन, और उसमें भी आपको एडवांटेज ऑफ वो नॉर्दर्न हिंदी बेल्ट का मिल जाता है आपको. एंड मे बी यू विल नॉट, इफ यू बिलोंग टू द प्लेन्स, हिल्स माइट नॉट बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस. अदरवाइज उत्तरांचल एंड हिमाचल आर ऑल्सो गुड प्लेस टू वर्क. Okay, but the diversity of job may be relatively lesser, but good work, good people. I've seen a lot of people are happy there. ठीक है, but वही है, are hills के आप हैं या plains के आप हैं. ठीक है, I think you can decide on zone 1, not a problem now. Where are you from? You prefer Uttar Pradesh as first choice.
not much to differentiate between. नहीं, but then उत्तर प्रदेश तो जोन 2 में है ना आपका. अच्छा, उसके बाद जोन 1 जब चूज करोगे, I think not much of a difference. You can put either one. Okay, but आप मेरे ख्याल से आपके केस के लिए हिमाचल उत्तरांचल 1 नहीं होगा, हिमाचल उत्तरांचल जम्मू कश्मीर 1 नहीं होगा. ठीक है, अगर आपका एडमिट 1 बनता है तो कॉन्सिक्वेंटली हरियाणा 2 बन जाएगा. अगर राजस्थान 1 बनता है तो एडमिट को 2 कर लो. ठीक है, बट आई थिंक दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. बट पावर सेंटर ऑफ कोर्स इज एडमिट. यू ऑल्सो गेट posted to Goa and Andaman, so you can go for Rajasthan. That will be a comfortable place to be in. Giving that UP, then you can go for ACMET number 2, and Haryana could be number 3, and the rest you can choose, not a problem. Haryana, Punjab को 3-4 कर लो, and the rest can follow thereafter. पंजाब में भी काफी recognition power है. That's one of your driving reasons. Zone 2 में I think again, relatively more process driven is Odisha. Relatively less amount of interference. But अगर आपको diversity of job चाहिए plus the social acceptance, ये चारों में काफी comparable. So इसमें यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड हो सकता है, या फिर ओडिशा, यूपी, बिहार, झारखंड हो सकता है. So that's your choice again. आपके केस के लिए यूपी will be 1. Where are you from, बच्चे? I'm from UP, but I don't want to. You don't want to as first choice. Then what would you prefer? Zone 1 is your first. Zone 2 में बताइए. अच्छा, माइक से बोल लीजिए. Zone 1 हो गया. Zone 2 बताइए. So I was thinking of putting Zone 3 as my second preference. Okay. Maharashtra. ठीक है. Zone 2 में बताओ आप क्या उठाना चाह रहे हो. Zone 2, so it's in my 4th order of preference, and I will put UP as the first out of the other 4. Okay, because UP is your home state इसलिए. हाँ, but that won't be my first choice in the list. In the zone में first choice नहीं होगा. ठीक है, that's all. ठीक है, fine. तो यूपी अगर first है तो I think makes sense. बिहार is second, then Odisha and then Jharkhand. Put Jharkhand second because Bihar, there's a lot of local level politics involved. अब यूपी संभाल रहे हो तो बिहार में क्या ही फर्क है. But I did have this theory. Yes, tell me. Like if I'm getting Jharkhand as my home campus, so what happens, because this last few years it has been also like people from Haryana home state, they're not getting because of the insider quota of unavailability. So वो तो अभी आप जान नहीं पाओगे. वो तो अभी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा. बाय टाइम इट कम्स आउट. कुछ आइडिया है अभी क्या है, वैकेंसीज कुछ है, आइडिया है आपको अभी? नहीं है. सो यू कांट प्लान, उतना दूर तक प्लान नहीं कर पाओ. सो गो विद योर बेस्ट चॉइस एंड let the vacancies insider है, outsider, let it take its own course. We cannot do much. ठीक है, तो I think zone 1, zone 2 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. Zone 3 में see, I personally would prefer Maharashtra and Gujarat as 1 and 2. Your choice. It could be Maharashtra 1, Gujarat 2, or Gujarat 1, Maharashtra. That's your choice. Because again, big economies, more diversity. The governments have been very proactive in terms of a lot of things. ठीक है, and you get that metro वाला, say all the facilities. So ये दो आ सकता है. And then of course MP, and MP is very similar to UP and Bihar to work with. वहां पर भी it matters, the social status, the mindset matters here. And so इसमें I think again zone 3 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को. गुजरात, महाराष्ट्र 1, 2 कर सकते हैं आप, unless it's a home state you can decide. अगर छत्तीसगढ़ होम स्टेट है, then go for छत्तीसगढ़ as your first choice. छत्तीसगढ़ first choice, MP makes sense as second choice, then Maharashtra third, Gujarat fourth, or Gujarat third and Maharashtra. ठीक है, zone 3 taken care of. Zone 4, I'll come to this later on. Take up zone 5. Zone 5, I think this will be chosen as a primary one only by those who belong to this zone generally. And of the states to work in, I think development पांचों में बहुत अच्छा है. Prospects are good, the working conditions are very good. Language could be the main barrier. Language issues थोड़ा sharp हो जाता है in states like Tamil Nadu, to some extent Kerala also. ठीक है, but I don't think there is much differentiate here. Karnataka में थोड़ा lopsided है. Bangalore is where bulk of the action is. Otherwise I think again, so
what would you have gone to? आप बताइए, zone 5 में आप क्या करना चाहेंगे? First choice. Kerala. You belong to Kerala? Okay, ठीक है. So Kerala is your first choice. Okay, then your second choice, Karnataka. Fine, Karnataka. Then I think Tamil Nadu, Andhra, Telangana. Is it like that? Fair enough. Not a problem. Tamil Nadu में, okay, again it is relatively more process driven there along with Kerala. But Kerala में एक challenge ये होगा. See again, because it's high level of development, good education, lot of dignity of labor, where everybody is okay acknowledged. वो जो होता है ना कि आई एम द बॉस एंड द किंग एंड यू आर ऑल माई, जो टिपिकल नदर्न हिंदी बल्ड होगा वो केरल में नहीं मिलेगा आपको. ओके, सो हाँ, सो इफ दैट सूट्स यू एज अ पर्सन वेर यू वांट टू वर्क विदाउट ऑल दैट अदर एस्पेक्ट्स, केरल इज अ गुड प्लेस टू वर्क. ओके, या वो इतना इश्यूज नहीं है. तेलंगाना, आंध्रा इज ओके. When Telangana was coming up at that time, they had a lot of prospect. नया खुल रहा था, but I don't think there is much to differentiate. Relatively, Andhra Pradesh definitely is more developed, more industries, more development, more budget, better finances compared to Telangana. But Telangana में mining है, development वहाँ पर भी है, agriculture issues are there. So again, you want to work from the social angle. Telangana में you have got more chance. Otherwise, good enough. Not much differentiate here. So Kerala and Tamil Nadu could be a conscious choice if you want to. Otherwise, बाकी तीनों में can't differentiate. आप बताओ. तो मैंने कहीं सुना है कि केरला में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है तो ब्यूरोक्रेट्स को परेशान करते हैं. देखो, और पार्टी का तो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस ये पूरे कंट्री में है. ओके, जो पार्टी आपका रहेगा पावर में, ओके, देखो, आई विल नॉट जनरलाइज लाइक दैट. Okay. In fact, I have a lot of students and people I know in Bengal. They're pretty happy in working in West Bengal. ऐसा बात नहीं है. ठीक है? So relatively, I said, आपको क्या चाहिए? If you want adulation and worshipped by the public, फिर तो बेटा cow belt, हिंदी belt ही देखो. Okay, that's where it is. But ऐसा कोई issue नहीं है. ठीक है? But वही है कि process driven है. Everything is set up there. तो जो आपको if I can quote unquote worship वाला कल्चर चाहिए, वो केरल में कम मिलेगा, वो बंगाल में भी आपको कम मिलेगा. Simple thing is education levels are different. Okay, and over time I think people have understood dignity of labor matters there. That's otherwise I don't think you want to work, you can work either ways. ठीक है? So this zone 4 में, I think zone 4 unless you are from this region, अगर आप नागालैंड के हो तो नागालैंड choice 1 है. If you are from Tripura, choice 1 है. Otherwise, I think if you are from the rest of the country and if you find language issues can be a challenge for you, then I think West Bengal, Assam could be 1 and 2. Okay, Assam, Meghalaya भी साथ हैं. There are talks about Meghalaya might become a separate one. दोनों बात हो रही है. That could be different in that case. So you cannot anticipate that. Otherwise, West Bengal and Assam could be 1 and 2, your choice. And बाकी 4 में the conditions are almost similar. वही hill states हैं, they have issues related to local tribal cultures, development issues, insurgency conflicts होते रहते हैं, मतलब हर state में for that matter. So between the 4, not much to differentiate. Okay, Tripura, Sikkim, Nagaland, Manipur. ठीक है, but you can definitely pick West Bengal and Assam as 2 different states altogether, language and proximity wise. ठीक है? So I think amongst you, I do not see anyone choosing zone 4 and zone 5 as 1 and 2. आपका choice 2 क्या है? 2 and 3? Zone 1 is my first preference. Okay. And zone 3 as my second preference, Maharashtra. Okay. But why do you go for zone 3 as second preference? I don't want to get into zone 2. Okay. Zone 5 becomes my. Okay. Makes sense. Zone 5 because of language issues. Okay. By the way, all of you will be जिस स्टेट में जाएंगे आपको बाकायदा लैंग्वेज सिखाया जाएगा. You can write official discussions local language में होगा. So they take care. You learn the language eventually. It's a more of a mindset thing. So that's fine. Have I answered your question on the zone and states?
All four of you, any questions? कोई वहां से कोई question है? Nitish, anybody from the? Any questions from online? One of the students asking if we get the home state if we don't put it first. Do we get the home state if we don't put it at the first? Yes, you can. You can. अगर आप जो choice of home state में अगर vacancy नहीं है, तो next state आपको मिल जाएगा. अगर आपको second हो मिल जाएगा. But there are issues about insider vacancies कितना है. That decides generally. But you can get definitely. Any other question? So I think this is taken care of. And पुलिस में भी आई डू नॉट थिंक देयर इज अ ड्रामेटिक. एक होता है कि ना जहां जहां पर कमिश्नरेट्स हैं, महाराष्ट्र कमिश्नरेट्स हैं, आई थिंक उड़ीसा वाला, तो दो टाइप ऑफ स्टेट्स में जनरली यू हैव गॉट मोर पावर. बट आई पर्सनली वुड नॉट डिफरेंशिएट मच बिटवीन द आईएएस एंड द आईपीएस. ओके, द सेम पैटर्न यू कैन गो फॉर, है ना यहाँ पर. दैट वाज आईपीएस. ओके, दिस इज द आईएएस. ठीक है, so I will not differentiate much. आप बताओ, any question you have specifically for IPS? Okay, so both are action packed states. I mean, services, IAS and IPS. So I think you can apply the same logic in police service also. ठीक है. But in terms of actual, अगर आप देखें action role, AGMET में, okay, there's lot of things to do. Okay, you have a lot of things to do in states like Rajasthan and Haryana also. Zone 2 में तो I think police is important all the 4 states. और काफी ज्यादा respect भी है, acknowledgement भी है, they are influential. Zone 3 में, okay, I mean, I will not differentiate. My point is that. Okay, the same logic of IAS you can apply for IPS also. ठीक है, any specific questions here? Nitish, any question from the online boys and girls? Okay, that having said, now come to your service. Okay, service में, तो I think पहले 4-5 में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Okay, all 4 of you IAS first, IPS, foreign service. ठीक है, तो नंबर 2 में क्या डाला आपने? IAS. ठीक है, so I think पहला 3 सर्विस है से. Okay, IAS, IPS, IFS, you can always rotate around. People are scared generally कि सर अगर IPS डाल दिया questions क्या पूछेगा, या IFS डाल दिया can I justify or not. Okay, so that should not be the issue. Okay, and the moment you put IFS at 3rd or 4th में, automatically IFS is out. Okay, God bless you. Congrats. अरे आओ. तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कपिल. You know the. Please we'll talk, no problem. ठीक है, सो अगर आपने आईएफएस को डाल दिया 3rd 4th में डाल दिया, ऑटोमेटिकली आपने कैंसिल कर दिया उसको. देन स्टूडेंट्स आर कंसर्न कि सर इफ दे आस्क अस व्हाई एम आई लीविंग आईएफएस, we'll find an answer to that. Okay, but go by what you really want to work for. Just because you can't answer a question, या answer आपका ready नहीं है, should be no reason for you to accommodate your service preference. ठीक है, go by what you. So पहला 3 में दिक्कत नहीं है. 4th, 5th, 6th में 3 services you can play around with: revenue, customs excise, and audit account. A lot of students make a mistake of putting audit account काफी नीचे. Don't do it. It's a pretty influential one. It has lot of powers. In fact, I think that is one service that has the ability of entering any service for auditing. Okay, so जो आपको चाहिए in terms of influence in the government circles. तो public dealing ज्यादा नहीं है इसमें. That's okay. Otherwise, you are fairly influential. Audit account को नीचे मत करना. That's my choice. So if I was filling up, maybe IAS first, IPS 2, IFS 3 maybe. Okay, then I put 4th में I could put audit account also. Like it's as powerful as that. So 4th, 5th, 6th में you can play around these 3. अच्छा, एक और डिबेट हुआ है अराउंड रेवेन्यू सर्विस कि ओवर द इयर्स रेवेन्यू सर्विस में पावर घट गया है. Yes, काफी they are doing a lot of automation, software based. They're trying to remove the public interface. Unless you go with ambition कि
कि आपको गलत तरीका अपनाना है पैसा कमाने का, ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू इन IRS, ठीक है. सो IRS, बट यस, कंपेयर टू IRS, द customs excise में you have got more public dealing, okay, but and that's also a uniform job. Customs excise यूनिफॉर्म जॉब है, उसमें मैटर करता है कि पोस्टिंग कहां है आपका, बॉर्डर स्टेट्स में हो गया या पोर्ट रीजन में हो गया या फिर सेंट्रल कोई कैपिटल में. यू कैन एंटिसिपेट ऑल ऑफ दैट, ठीक है. सो ये तीन में जस्ट बी अवेयर. कस्टम एक्साइज डेफिनेटली हैज a uniform service, good amount of power, but then with that power also lot of challenges come in. Corruption issues are there, contraband, smuggling, but exciting भी है in terms of, okay, so that's one. So police अगर है preference, okay, as a good one, so custom excise will make sense. Revenue service will always be powerful despite all the automation done. Ultimately you will be taking a lot of audits, as a lot of inspections, and the rest will happen, but हाँ उतना discretionary powers नहीं होगा आपका over the years. Audit account में there is no public dealing, but you are well connected. See, a very important aspect of your civil services is that the network that you develop. That's important part of your job. Okay, and sometimes deputation, all of them go into some deputation or the other. बहुत कम jobs होंगे जिसमें कि deputation नहीं होता है. The revenue guy could be in some deputation of administration. Administration could be in some deputation of some other job. दिल्ली में आ गए डेपुटेशन में. सो ऑडिट अकाउंट्स में काफी होता है. दिल्ली इज वन ऑफ सेंटर्स डेफिनेटली, एंड आई एम टोल्ड दैट उनका हॉस्टल एंड ट्रेनिंग इज वेरी एक्साइटिंग. सो द हिल एरिया में यू हैव दैट फैसिलिटीज. सो इट्स अ नाइस क्लोज ग्रुप ऑफ वेरी वेल कनेक्टेड पीपल. ओके, सो ऑडिट अकाउंट को नीचे मत डालना इज माय सजेशन. ओके, सो 1 2 3 5 6 and 8 taken care of. Can you give me your one? I am marking it here. Okay, 1 2 3 5 6 and 8 taken care of. ठीक है. अच्छा, now the new list I think does not have some of the services, so इसके according नहीं जाएंगे. No? Not very keen on IPS. You are. I'm not very keen on IPS. Okay. So in that case, IRS income tax or audit account calculation. Absolutely. Like I said, question जो पूछेगा आप देखा जाएगा, आप क्या आंसर करोगे. बट क्वेश्चन डर के कि पूछ देगा ऐसे नहीं कर पाऊंगा, आईपीएस ऊपर डाल दो और मनी नहीं है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो यू कैन पुश इट डाउन, नो प्रॉब्लम. यस, ओके. अच्छा, नाउ सर्विसेज लाइक डिफेंस एस्टेट. देखो, डिफेंस एस्टेट है, देन सिविल अकाउंट सर्विस है. You can see 11 civil accounts, defense estates, number 7. Okay. Now these are fairly decent services. Okay. Defense estate में you think that you are an administrator in a cantonment area. Okay. Military वाला जो भी facilities हैं, you get avail that also. ठीक है, आर्मी और मिलिट्री या जो भी है आपका, you get that. And these are very organized, you know. उनका भी अपना estate होता है, उनका civil issues होते हैं, you take care of that. So a lot of people do not know about defense estate. Okay, I mean, if I'm going to equate, you are like an IAS officer in the defense cantonment area. ठीक है, and that's fairly influential also in some ways. But वही है कि ना, it's a small pocket, okay, couple of cantonments, so it's a decent job. Don't push it down just because you do not know this. And civil accounts is also fairly good. Okay, I mean, civil accounts are not equated with revenue service and customs, but it is a good one where again you see all the expenditure budgets and the rest, they go through you. Very active role in how government is spending and the rest account jo hai, you'll have the role there. So don't push it down. Now, one group of services that I can definitely talk कि अगर आपको hardcore
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस चाहिए इज डैनिक्स एंड डैनिप्स. ग्रुप बी सर्विसेज हैं, बट सी योर रोल एंड योर इन्फ्लुएंस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू IAS and IPS, at least for the public. सर्विस के अंदर में डेफिनेटली IPS will have a strong, more important say. The IAS will have more important say, at least for the first 7-8 years. And by the time your service progresses, you are equivalent to most of them in 10 odd years में, कभी 10 years के 15 years में, but हो जाता है. So if you're looking at administration role, police में and administration में, I think Danics and Danips are good enough. तो yes. सर मैंने IFS को मुझे नहीं लेना है, तो उसको मैंने IAS नीचे रखा है. As good as आपने हटा दिया और क्या? 5 पे रख दिया. ठीक है. That's your choice, no problem. So the moment we see it is 4th, 5th annual कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो बेसिकली. बट उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, what questions they might ask. मैंने देखा है बच्चों को सर्विस पे क्वेश्चंस पूछे नहीं जा रहे इंटरव्यू में. आज से 7-8-10 साल पहले पूछते भी थे, बट रिसेंट टाइम्स में आई हैव नॉट सीन टू मेनी क्वेश्चंस अराउंड कि ये कैडर क्यों लिया, वो स्टेट क्यों लिया, या सर्विस आपने ऊपर पूछा नहीं, देखा नहीं मैंने. सो गो फॉर व्हाटएवर यू. कंडीशन ये है कि अगर आईपीएस ऊपर है, तो अगर आईपीएस है तो फिर आईएएस वैसे भी नहीं मिलेगा. वैसे ही नहीं. यस, मेडिकल में कभी-कभी आईटीएस में मेडिकल में. ठीक है, ठीक है. सो आई डोंट थिंक, देखा जाएगा आंसर क्या करोगे, रखना रख लो, कोई बात नहीं. सो डैनिक्स एंड डैनिप्स एक अच्छा कैटेगरी ऑफ सर्विस है. सिमिलरली दिस डिफेंस स्टेट्स एंड सिविल अकाउंट्स भी अच्छा कैटेगरी है. इनमें ऊपर नीचे कौन सा करना है, दैट्स योर चॉइस. ओके, इफ यू लाइक इफ यू हार्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो मेरे ख्याल से ऑडिट अकाउंट रेवेन्यू के बाद में यू कैन पुट डैनिक्स डैनिप्स आल्सो. 7-8 में आ सकता है ये आराम से. या फिर यू वांट टू गो बाय द ग्रुप ए ग्रुप बी वाला, तो ग्रुप ए में आप ये डाल सकते हो, डिफेंस स्टेट्स एंड सिविल अकाउंट्स आप डाल सकते हो. नाउ ये 3 सर्विसेज हैं अबाउट विच, यस बताओ. My home state is Delhi. Can I put Danish and Danish just after revenue services? Yes, you can. Tarun, you can put, no problem. But don't put Danics, Danip just because home state is Delhi. Okay, that's a wrong way of choosing. You choose according to what type of role you want to get into. Okay, you can be in Delhi even with different states. You can be in Delhi even with corporate service. You can be in Delhi even with civil accounts and even information service. ठीक है, तो Delhi होम स्टेट है इसलिए डाल रहे हो डैनिक्स डैनिप्स, दैट्स अ रॉन्ग आर्ग्यूमेंट. ठीक है, आप डालो डैनिक्स डैनिप्स बिकॉज हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेशन का फील है, हार्डकोर एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, and you are equated as IAS and IPS at least by the general public, and so that's good enough. Okay, promotion lately थोड़ा सा faster भी हो गया है डैनिक्स डैनिप्स में, खासकर डैनिक्स में हो गया है. ठीक है, that used to be an issue earlier. ठीक है, अदरवाइज अगर ईगो इश्यूज नहीं है कि मेरा ये बैचमेट IPS है और मुझ पे दादागिरी कर रहा है टाइप का, that happens. मेरा जूनियर है IPS और मैं डैनिप्स में हूं, अगर वो ईगो इश्यूज नहीं है in terms of role, Danics and Danips is good. Question. Huh? So this is about the IAS. What would be the impact on IAS if privatization would have an impact on the railway? देखो, रेलवेज डिस्पाइट प्राइवेटाइजेशन, यू अल्टीमेटली इट विल बी द गवर्नमेंट्स कैश काउ फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, 10-15 साल में मुझे लगता नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा. लॉट ऑफ जूनियर रोल्स विल गेट कॉम्प्रोमाइज, बट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अभी भी सब्सटेंशियली इन द हायर मैनेजमेंट रहेगा. वैसे नहीं IRMS हो गया तो अब गवर्नमेंट ऑफिसर कोई रोल नहीं, इनफैक्ट शायद थोड़ा बढ़ भी जाए. Okay, because then you become quite an important person to deal with the corporate entities also. Policy government ही बनाएगी. So railway as an important government service, it will remain. It will remain. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सही क्वेश्चन है, वो बाद में करेंगे. अच्छा ठीक है. So ये कैटेगरी एक हो गया. Now I said corporate law, trade service and information service. Okay. ये तीनों को, इन तीनों का ना एक्सपीरियंस बड़ा मिक्स रहा है.
I've heard people who have been happy with their jobs, and I've also heard people कि बड़ा mechanical and वो it's a very not much action filled jobs. Okay, but I'll still say कि trade service and corporate law, I think in times to come will become important. Although ये narrative last कुछ साल से रहा है, okay, because trade का रोल रहेगा, WTO will remain important, foreign postings भी इसमें होंगी, and as economy changes इनका रोल भी चेंज होगा. But as of now in general थोड़ा सा क्या बोले एक्टिव रोल इसमें कम है. ठीक है, बट यू कैन टेक अप. और इन तीनों में से इंफॉर्मेशन सर्विस नीचे कर देना. ओके, लेट कॉर्पोरेट लॉ एंड ये क्या है ट्रेड सर्विस भी ऊपर रहे. ओके, एंड यू कैन पुश IAS बिलो. ठीक है. अच्छा, जो सबसे नीचे वाला कैटेगरीज है, I'll say is will be a Pondicherry services, okay, and even armed forces headquarters वाला. Now IR ये जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हालांकि यूनिफॉर्म जॉब है, but it's not really a typical police force. They are more concerned about the railway properties का protection, okay, and not much of public dealing either. Okay, so but it comes with lot of benefits of railway service. Railways का अपना ही वो एक तामझाम है, एक within the service lot of benefits are there. Okay, but even then I will put it थोड़ा नीचे डालूंगा मैं. Okay, which is something like postal service. Okay, then maybe IRPFS, then maybe Pondicherry. Okay, and then probably armed force headquarters. Armed force headquarters wala you can keep it as 19. Okay, so have I addressed bulk of? तो मैं generally services को ना 5 blocks में कर देता हूं. First block is जो पहला मैंने 5 बताया, that's first block. Okay, second block में civil accounts, defense estates, DANICs, DANIPs. Okay, you can put it as second block. Third block will be okay, ये आपका ट्रेड सर्विस, सिविल अकाउंट, सॉरी क्या था, कॉर्पोरेट सर्विस एंड IAS को इन तीनों में थर्ड रखना. ओके, हालांकि when I remember information service was launched because of lot of media channels coming up and a lot of excitement था कि काफी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, बट हुआ नहीं. ओके, सो it is not as active as it could have been. And last group में you keep all of that I talked about. ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन तो ऊपर रह सकता है, then Pondicherry and the rest. ये अपना redundant हो जाएगा धीरे धीरे. So maybe after IAS you can put this post and telegram जो भी है telegram service. ठीक है, because धीरे धीरे this will become increasingly redundant. Okay, वो फिर डेपुटेशन वाला ही रोल ज्यादा रह जाता है. तो इसको आप नीचे ही रखो. Have I answered your service? आप तो लिख ही नहीं पा रहे हो, फिर आप कैसे याद रखोगे? I'm so sorry. You have filled your choice. Let me see your choices. 1 2 3 4 5 6. Okay, over revenue है. Okay. 20. दिल्ली अंडमान आपने बहुत नीचे किया हुआ है. You can reconsider that. You put Delhi Andaman and Pondicherry below railway protection force. So you can consider if you want to relook into that. अच्छा ठीक है. If you have decided, then not an issue. Why should postal be high up compared to NIPS and DANICs is again a question. ठीक. If you have thought about it, group A and group B, that's your choice. ठीक है. Any other question? नीतीश बताओ. एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम IAS, अगर आपने 4-5 चॉइसेस बन गए एंड उस रैंक में उसको नहीं आया, वो सर्विस नहीं मिली,
तो उस केस में क्या होता है, कौन से रैंक उसको मिलेगा, कौन से अकॉर्डिंग टू व्हाट ही हैज चोजन, वैकेंसी है इन सीक्वेंस ऑफ उनका जो चॉइस है वही मिलेगा। सो बाकी दिन होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ अस पहला 4-5 सोच के डाल, उसके बाद ब्लाइंड डालते हैं। दैट्स डेंजरस ट्रेंड। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल। आई थिंक जो सजेशन मैंने दिया है इन 3 और 4 ब्लॉक्स में, उसी में मार्क है। ठीक है, सर Yes. कभी ऐसा भी होता है कि ऑलरेडी पीछे रहा हो तो सर्विस 20 मिनट में लगता नहीं ऐसे, अनलेस एज ए वेटिंग वाला इशू है, जो पेपर वर्क इशू है, एंड समटाइम्स वैकेंसी नहीं है तो आपको डाल देते हैं, जब अपग्रेड होता है तो उसमें आ जाते हो आप लोग। ओके, बट ऐसा नहीं है कि रैंक है और जॉब नहीं मिल रहा है, अनलेस आई सेड बिकॉज दिस, अदरवाइज यू गेट इट। ओके, सम ऑफ देम आर पुट इन द वेटिंग लिस्ट, लेकिन सेकंड लिस्ट निकाल रहे हैं लास्ट 3-4 साल से, यू गेट इनटू दैट। इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो अभी से? Have you decided that you want the 1800 rank, sorry, 800 रैंक? नहीं सर, मैंने यूट्यूब पे देखा था। इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ, वो वंस इन अ व्हाइल होता है, ऐसा होना तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतना नेगेटिव ना सोचो, यू शुड गेट। In fact, I would like to tell all of you right now, there is not much of difference in the students who have been called for interview. ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू वाकई में अच्छा कर लेते हो ना, इट्स पॉसिबल टू ब्रिज योर मेंस, अनलेस मेंस एकदम बॉर्डरलाइन केस है। ठीक है, बट इफ यू स्कोर अबव 180-190 इंटरव्यू में, आपको 100% रैंक मिले, अच्छा रैंक मिलेगा और अच्छा सर्विस मिल जाएगा। सो मेंस में क्या परफॉर्मेंस है आप लोगों का, व्हाट हैज बीन योर मेंस परफॉर्मेंस, लेट दैट नॉट बॉदर यू एट ऑल। रिमेंबर दिस, even if you're qualifying by 1 mark, you are still in the hot race to get a proper service that you are aspiring for. तो अपने आप को मेंटल, बहुत बच्चे आते हैं कि सर मैं तो अच्छा हुआ नहीं है, जस्ट क्वालिफाई किया हूं, कितना ही मार्क्स आ जाएगा। नो, यू शुड गो ऑल आउट। इंटरव्यू कॉल का मतलब है योर फुट इज ऑलरेडी इन टू द डोर, इट्स अप टू यू, यू पुश इट हार्ड एंड ओपन इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, so don't think about ranks, and even if you have just cleared the mains and you get 180-190 type, आप top 20, 30, 40 में आ जाओ। That is the possibility of getting a good rank. So please don't talk negative. यार इतने लाखों बच्चों में से आप लोग 1700-1800 बच्चे हो, that's a huge achievement. तुम्हारे मार्क्स क्या रह रहे हैं इंटरव्यू में? पहली बार 154 था, दूसरी बार 150। We'll work on it differently. There's something missing. हाँ, डाउट है नीतीश? ठीक है, सो इंटरव्यू इज गेम चेंजर। और तुम्हारा मेंस में बुरा मार्क्स तो नहीं है, ठीक ठाक ही है। मैटर ऑफ दैट लास्ट वन गुड पुश दैट यू नीड। So let's hope for the best. So none of you talk yourself out of the race, please. अपने आप को उठते बैठते बोलो what you are capable of. You can qualify. You can definitely score the required marks. 180, 190 के नीचे आपको सोचना ही नहीं है. And do what it takes. And I think all of you will be in the same disadvantaged position because बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन का. ठीक है? One common mistake people do is they run around mock sessions. In fact, I'm taking this opportunity to talk about this. देखो, mock session क्या है? Mock session is basically a practice, not really training you into what you can answer better. So if you are already a good candidate, mock बोलेगा very nice, continue. If you're not a good candidate, mock बोलेगा you are trying hard. Okay, you are definitely putting efforts. Put in more efforts छोड़ देगा. ठीक है? If you are at the middle level, mock आपको क्या बोलेगा? कि you need to work hard and you'll qualify. यही तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं? Mock sessions is not the way of getting ready for the interview. Remember this. Mock sessions make sense once आपने बाकी काम सेट कर दिया है. Which is know all the details about yourself, about your state, about your hobbies, about current affairs. आपने प्रैक्टिस कर लिया है उठते बैठते शाम सुबह कैसे बोलना है, how to articulate, how to engage.
हाउ टू डील विद डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सब करने के बाद में मेक सेंस. What happens is 9.9 out of 10 students are running after mocks. और मॉक से बहुत वक्त जाया होता है. वन सेंटर वहां जाके बैठो 1-2 घंटा, सेकंड वहां जाके बैठो. एंड पैनल्स ऑल्सो एज एन इंस्ट्रक्शन जनरली द पैनलिस्ट डोंट वांट टू डिस्करेज यू. सो आप बुरा भी कर रहे होगे ना, they'll tell you you are trying hard, you are okay, maybe this was not your best chance, you can try again. They'll tell you all the nice words and send you off. Mock sessions is not where you learn how to deal with the interview questions. One. Number two, एक mistake होता है that when we are studying current affairs, our focus is on the factual aspects. Think of India, think of Ukraine and Russia का war चल रहा है. Facts आपको पता है ना, ये प्रेसिडेंट कौन है, वो प्रेसिडेंट कौन है, okay, what are the cities, कहां पर अटैक हो रहा है, यूक्रेन क्यों वहां पर, ऐसा पता है आपको. Most of us end up discussing the factual content alone. But questions पूछते हैं about your opinion on issues. Okay, say, look at this instance, India UN में has abstained, but the judge in the Court of Justice, he has voted against Russia. ये fact आपको पता है, all of you? The question now is, what do you think about it? कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएन में एब्सटेन कर रहा है, ठीक है, एंड दिस मैन हु इज द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, ही इज वोटिंग अगेंस्ट रशिया. नाउ टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इज इट अ मिस्टेक? इज इट डेलिबरेट एम्बिग्यूटी? डू यू थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव दैट वी हैव डन, और दिस इज गोइंग टू सेंड अ रॉन्ग सिग्नल ऑफ कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी? अब क्या बोलोगे इसमें आंसर? और इसमें there is no one answer. I can say कि no, this is actually a very surprising move, okay, because I personally did not expect that the judge would vote against Russia when the general government mood and the parliament mood is let us abstain. Opposition party also agree. Very interesting, no? Okay, even for that matter, Miss Banerjee, Mamata Banerjee, has gone on record to say we support the government in Russia Ukraine war में. पूरा कंट्री एक तरफ है and this one man is voting against. I can say this is surprising. I don't know why he did it. I can't understand. Or my answer can be, it's a good move, because diplomacy में it's nice to balance off. So maybe the government of India is doing this deliberately, okay, as a good move to ensure that we are at least on both sides. ठीक है. और third question answer could also be, sir, I really can't make sense of why this has happened. I'm sure there's some dynamics going on inside. Instructions होगा to which I am not privy, but I can't make sense of why this happened. ये भी आंसर हो सकता है आपका. बट ये आंसर के लिए आपको कुछ और बेसिस देना पड़ेगा. कैसे कभी पहले हुआ था क्या? Okay, what could this mean in terms of future engagement maybe? So most of us are preparing factual content for the interview, and that's where the mistake lies. Factual content, यूपी से आप अगर हैं, इलेक्शन बारे में पूछ देगा आपको, कौन जीता, क्या है, नहीं है, फैक्चुअली आप बता दोगे. ओपिनियन बेस्ड एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि यूपी में there's a massive turnout of women voters हुआ है. Are you aware of those data? Okay, and यही चीज वेस्ट बंगाल में भी हुआ है. वेस्ट बंगाल में भी विमेन वोटर्स का परसेंटेज बहुत हाई रहा है, यूपी में भी हाई रहा है. नाउ द क्वेश्चन बन जाते, इंटरेस्टिंग बनता है. व्हाट डू यू थिंक रोल ऑफ विमेन इन गवर्नमेंट, फाइटिंग पेट्रियार्की, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग? डज इट टेल यू समथिंग अबाउट द फ्यूचर डायनेमिक्स ऑफ स्टेट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट प्रायोरिटीज? अगर विमेन आ गए तो प्रोहिबिशन के बारे में क्या सोचते हो? सो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, don't simply mine facts, don't simply mine data for the sake of data. Data बहुत important, I repeat. Okay, without data facts, your discussions are very superficial. Your discussions are very naive, simplistic. Okay, but आपको opinion तक जाना होगा, which means your 70-80% of your time should be on reflecting on the issues.
You should spend 80% of time on thinking about the issues. कि मुझे इसमें एक वीडियो डाला भी था कि आपका आंसर को 2 पार्ट डिवाइड कर लो कि कोई भी इशू है उसमें आपका पर्सनल फीलिंग क्या है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये ऐसा हुआ, या मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा हुआ, या मैं एंग्री अबाउट दिस थिंग हैज हैपेंड, और आई एम कंफ्यूज अबाउट इट हैज हैपेंड, आई एम डिसइल्यूजन इट हैज हैपेंड, आई विल सपोर्ट इट, आई डोंट सपोर्ट इट. दिस इज अबाउट योर फीलिंग थिंग. एंड द सेकेंड पार्ट इज जस्टिफाइड. So if I ask you, what do you think about, the type of random उठाया. Have you heard about inflation issues recently? मैंने पूछा क्या, what is your opinion about inflation? तो आपका आंसर के 2 पार्ट डिवाइड कर लेना. एक तो फैक्ट्स पता होना चाहिए, 4, 3, 5, 6% इन्फ्लेशन जो भी है. You expected to know that. WPI कितना है, कंज्यूमर इंडेक्स कितना है वो पता होना चाहिए आपको. व्हाट इज द टारगेट ऑफ द आरबीआई वो भी पता होना चाहिए. ओके, ईज करना है नहीं करना है वो फैक्ट. नाउ मैं आस्किंग व्हाट्स योर ओपिनियन. ऑफ ओपिनियन में यू मस्ट टेल सर आई एम कंसर्न, सर आई थिंक इट्स नॉट बिग ऑफ अ वरी अभी इन्फ्लेशन बिकॉज ग्रोथ चैलेंजेस हैं. सर इट्स डिफिकल्ट डिफाइन अंडरस्टैंड बिकॉज ओके कि एक तरफ सर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और सम कमोडिटीज एट सेम टाइम ग्रोथ भी हो रहा है, एंड आई कांट डिसाइड ऑन कि व्हाट शुड आई सपोर्ट मोर, वो भी कह सकते हो आप. ठीक है, सो इट कुड बी कंसर्न, इट कुड बी मे बी यू आर ओके विथ इट, इट कुड बी एन अलार्मिंग सिचुएशन. ओके, कहने के बाद में जस्टिफाई करो आप. इफ अलार्मिंग, व्हाई डू से अलार्मिंग, यहां पर आप डेटा बताओ, फैक्ट्स बताओ. आई एम नॉट कंसर्न मच, फिर आप एक्सप्लेन करो भाई. So rather than focusing on, okay, let's say if I was asking about hijab issue, ठीक है, what do you think about it is your question. We'll ask to define hijab, of hijab, maybe you can study. आपका क्वेश्चन क्या होगा? What do you think about it? Again, same part. I like it, don't like it, support the government, I don't support the government, I'll go by the Supreme Court. ये एक aspect हो गया. Okay. एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज वाई. इसका आंसर आपको कोई पैनल नहीं दे सकता बिकॉज दिस इज योर पर्सनल आंसर. इफ यू आस्क मी सर मैं क्या बोलूंगा, माई आंसर कांट बी योर आंसर. सो इन प्रिंसिपल योर इंटरव्यू प्रिपरेशन हैज टू बी ऑन टॉकिंग टू योर सेल्फ मोर. हाँ, ऐसा कोई फोरम बन जाएगा वेर यू कैन डिस्कस डिफरेंट डायमेंशंस. Join that forum. In fact, this is my objective this time. Okay, where 2-3 of us weekly basis में 3 days में will sit down and will discuss issues. एक टॉपिक उठाएंगे, आपको पहले बता देंगे ये टॉपिक का डिस्कशन ऑन वेडनेसडे, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, and then we'll give you all different type of opinion based questions. इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आपसे मैं सोचने मजबूर करूंगा. So your preparation should happen in 3-4 ways. एक प्रिपरेशन होगा आपका डैफ को एकदम स्ट्रॉन्ग कॉर्नर करो. सेकेंड प्रिपरेशन होगा learn to speak more confidently, but that comes when you know your answers confidently. Third aspect होगा dig into as many opinion based questions as possible. I remember last time we हम करा रहे थे, at least, I mean, of the people I sat down personally with, at least 10-15 ऐसे बच्चे थे who could not give me the specific details of their own districts and the adjoining districts. If I ask somebody कि बताओ आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है, वेरी जनरल क्वेश्चन, सर अनएम्प्लॉयमेंट है, सर डेवलपमेंट नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं, या सर स्कूल्स नहीं है, व्हाटएवर. वेरी जेनेरिक एंड वो शायद इंडिया के कोई पार्ट में फिट हो जाएगा आंसर. दैट्स नॉट गुड प्रिपरेशन. योर गुड प्रिपरेशन वुड हैव बीन सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऑन सो एंड सो तालुका और सो एंड सो मे बी ब्लॉक रीजन में सर मेजर प्रॉब्लम ये है. Okay, in so and so town of my district में sir, the problem of pollution of groundwater is very very high. In so and so village
लास्ट 3 years में वेरी हाई रूरल आउट माइग्रेशन हुआ है. आई होप यू गॉट द पॉइंट हियर. नॉट जेनेरिक एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है. अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट में एंड एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट में आई फाइंड द एनरोलमेंट रेशियो इज लेसर देन द स्टेट्स एवरेज. यू विल हैव टू डिग इनटू योर डिस्ट्रिक्ट्स. और इसको अभी करो, नॉट 10 days, एंड यू हैव टू इंटरनलाइज दिस. व्हेन स्पीकिंग दिस, you speak with lot of, involvement. You're concerned about your district's problem. Okay. You should be able to literally list down कि वो 4 इंडस्ट्री का नाम बताओ डिस्ट्रिक्ट में क्या है. सर ये कंपनी है, ये कंपनी, ये कंपनी. Unfortunately, this is this type of an agricultural resource base, but I won't find a company or a industry based on that type of resource. पैनल बता रहा है. I have no idea. से आप बलिया से आते हो फॉर एग्जाम्पल. अब मुझे बलिया कुछ आइडिया, मैं पूछूंगा बताओ कपिल बलिया में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, योर एंगेजमेंट सर बलिया इज ओके ईस्टर्न साइड में है, बॉर्डरिंग सो एंड सो स्टेट एंड जनरल पॉवर्टी प्रॉब्लम्स एंड टोटली ओके मिस्ड अ चांस. सो एज एन इंटरव्यूअर आई डू नॉट नो व्हाट द आंसर शुड बी. ठीक है, आप जो बोलोगे हाँ ठीक है. It's for you to literally leap on the opportunity and start explaining it. It's for you to take the chance. This is my area. मेरे एरिया के बारे में पूछा है. The facts are ready. Analysis is done. And you're wrong. At least नो आपके स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट का क्या रैंक है. Okay? So this preparation is more important than running after mocks. आप एक मॉक सेशन जाओ, कुछ नहीं तो आपका 3 से 4 घंटा वेस्ट हो गया. आई एम नॉट सेइंग डोंट गिव योर मॉक्स, प्लीज गो गिव योर मॉक्स, बट 2-3 मेक सेंस एंड गो टू पीपल वेयर यू नो दैट यूल गेट अ गुड, बट नॉट रिलेंटलेसली आप दे रहे हो 5, 10, 15 मॉक. नो, 2-3 इज इनफ, मोर देन इनफ. बट स्पेंड मोर टाइम इन प्रिपेयरिंग द डिटेल ऑफ योर डैफ अबाउट योर स्टेट एंड करंट अफेयर्स में all opinion based answers. उसके लिए somebody must fire opinion based questions on you. Make your list there. Make sense? Okay? I digressed. क्या मैं डिस्कशन कर रहा था भूल गया. Why did I even take this up? Anyways, ठीक है. So having said that, आपका सर्विस प्रेफरेंसेस बता दिया आपको मैंने. I've given you your cadres. अच्छा, now come to your hobby. Next hobbies ही होता है ना आपका, hobbies, interest. Okay, next. Any questions from the online guys? क्वेश्चन था related to that only कि डिस्ट्रिक्ट वाला क्वेश्चन अगर आता है तो देकर हम लोग बोल सकते हैं 2-3 कितने मिनट तक कितनी चीजें दे. बेटा थोड़े टाइम करोगे स्टॉप वॉच लेकर. यू मस्ट हैव द एबिलिटी देख के इंटरव्यू बोर्ड का चेहरा कि बोर्ड हो गए एक्साइटेड है. अगर एक्साइटेड है एंजॉय कर रहे हैं तो और बोलते रहो ना, हु सेज नो. ओके, बट अगर बोर्ड हो चुके दिख रहा है, ओके देन स्टॉप. जनरली none of your discussion should be more than 40-50 seconds at one burst. Okay, tell me about district. और आप 2 मिनट बोल दिए ना, मैंने वो खत्म हो गया. तो 30 seconds में बोलो, then wait for a pause or anything else or whatever. ऐसा टाइम नहीं. It's a अच्छा, by the way, when you are talking to your friends or your somebody, say your principal in your school, or you're talking to a guest in your house who's your father's very say a very close friend, do you talk to them looking at timing your talk? You don't. ठीक है, एक कन्वर्सेशन है ना. Conversation is always interactive. Time it. You should know generally कि अगर ज्यादा बोल रहे हो मतलब वो इंगेज ही नहीं कर रहा आपके साथ. इसलिए 30-40 seconds में पॉज देकर ask for input, look for cues from the board कि are they engaging with you. ठीक है, so कि रूल नहीं है कितना देर बोलना है. We'll take this up when I sit down with you guys one to one. We'll take this up. Don't worry. अच्छा, now come to your prizes and medals. अच्छा, एक चीज ध्यान रहे, ये जो पेज नंबर जो भी है इसमें है प्राइजेस, मेडल्स, स्पोर्ट्स, एनसीसी, लीडरशिप इन कॉलेज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज.
ये सब चीज आप समझ लो कि इस पेज के बेसिस में दे विल नॉट गिव यू रैंक्स एंड मार्क्स, रिमेंबर दिस. You may be outstanding here, but if you can't talk and engage with the board meaningfully, ये पेज का, this page will only disappoint them. ये तो गोली दे गया, right? Your page may be blank, but your engagement otherwise is excellent. You'll get brilliant marks. So ये page is not the basis of your selection. Remember that. That is why don't overdo this. हाँ. Genuinely आपका achievements हैं एक दो, and generally I'll say don't write about achievements the level of class 6, 7, 8, 9 मत लिखना. स्कूल में मैं जीत गया वो लेमन रेस, ओके, और यू नो अगर आप क्लास 10th में कोई स्टेट लेवल में जीते हो, क्लास 10th में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीते हो, वो भी चलेगा, बट I'll say उसके नीचे ये सब नो कॉन्सिक्वेंस, इग्नोर ही कर दो. ओके, you were a captain of a house in class 8, 9, unless you are a head boy, head girl, या part of some government meeting secretary थे, तब मेंशन करो, अदरवाइज स्कूल को इग्नोर करो. कॉलेज में भी जनरली जो कल्चरल नीड्स होती हैं, that does not tell us much about you and your personality. अगर इंपॉर्टेंट पोजीशन है, आपको सेक्रेटरी हो, and really inter college level पे you have got a extraordinary award, mention that. But you know, inter college meets में तो बहुत टाइप के कंडीशंस होते हैं, right? Okay, वो some of them weird also are there. Please don't. To this morning I was seeing somebody saying various awards in inter college cultural meets. It's of no consequence. Specify करो. Yes, I was gold medalist in so and so sports in college. या इंटर जोन, इंटर डिस्ट्रिक्ट था, इंटर कॉलेज था, विच इज रियली कमेंडेबल इन टर्म्स ऑफ योर अचीवमेंट, मेंशन दैट. और अगर नहीं है, डजंट मैटर, यू डोंट हैव टू पुश एन अवार्ड फॉर सेक ऑफ पुशिंग एन अवार्ड. ठीक है, सो ऐसा कुछ है, आप बताओ, एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू शेयर? यस सर, ये प्राइज एंड मेडल एंड स्कॉलरशिप्स वाले में सर एमफिल में मैंने सर टॉप किया था यहाँ पे जेएनयू में, एक वो लिखा है. दूसरा सर यूजीसी जेआरएफ नेट है मेरे पास, उसको छोड़ दो. यूजीसी जेआरएफ छोड़ दूं? छोड़ दो. ओके सर. ऑल इंडिया सेकंड I'll tell you why I'm saying UGC JRF नहीं लिखो. Why? Because that is not relevant to your administration acumen. ठीक सर. आपके पास एमफिल का टॉपर का है, वो लिखो डेफिनेटली. और बताओ सर, ऑल इंडिया सेकंड पोजीशन थी मेरी ऐसे राइटिंग कंपटीशन में. किस लेवल में? ऑल इंडिया लेवल सर. मैं किस क्लास में, किस कॉलेज? क्लास 10th में था सर मैं, और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड रोडवेज. ठीक है, क्लास 10 ऑल इंडिया लेवल इज बस. और कुछ अवार्ड्स हैं? सर बेस्ट एक्टर अवार्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. ठीक है, ओके, 2 and 3. यस सर. आगे भी बताऊं स्पोर्ट्स एनसीसी वाले सर? नहीं, प्राइज में Yes, sir. रिमूव दैट एंड दैट विल सफाइस. ओके सर. ठीक है. अगर आपको जॉब के बारे में पूछा गया, व्हाट विल यू डू डोंट क्वालिफाई, वहां बता देना कि सर आई नो आई हैव क्वालिफाइड जेआरएफ एंड यूजीसी नेट वगैरह, सो प्रोबेबली आई लुक इनटू टीचिंग एंड आई विल डू दैट. सो दैट्स नॉट रियली अ ओके मेडल और ए प्राइज ऐसा. हाँ, स्कॉलरशिप है, आई एग्री दैट. स्कॉलरशिप इसलिए मैंने लिखा था सर. इसीलिए लंबा लिस्ट मत करो. अगर आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगता है, वो 3 लिखो, या 2. जनरली आई से राइट ओनली 2 मोस्ट ग्लेरिंग and that stands out, write only 2. तो पूरा 4 भरना मत, is my suggestion. यस. ठीक है. एनसीसी स्पोर्ट्स में आ गया, एनसीसी है तो पक्का मेंशन करना, और व्हाट बी ए जो भी है, सी जो भी है आपके पास, वो मेंशन कर देना. ओके. स्पोर्ट्स में अगेन, इफ इट इज रियली एन इंपॉर्टेंट लेवल, ओके, गेम खेला है आपने, वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला है, इंटर कॉलेज खेला है, then do mention. आपको कुछ है ऐसे स्पोर्ट्स में? सर मेरा एनएसएस है और टेबल टेनिस में सर यूनिवर्सिटी लेवल पे. ठीक है, गुड इनफ. 2. डोंट गिव मोर देन 2 entries is my suggestion. Okay, because देखो, अगर तुम्हें ज्यादा भर दिया ना, as an interviewer also I don't have patience to read and ask you, फिर आपका वो डाइल्यूट हो जाता है. एक जो स्ट्रॉन्ग है, आंख पट्टे ask you and then be very prepared on that. एकदम अच्छे से उसको समझ के, क्या एडवांटेज है, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट वाज इंस्पिरेशन, हाउ इट चेंज सम थिंकिंग ऑफ योर्स, या कैन डू, देन गो डीप इनटू इट प्रॉपर्ली.
एनसीसी है तो सिविल डिफेंस में घुस जाओ, वॉलेंट्री में घुस जाओ, टॉक अबाउट आर्मी कंपलसरी है या नहीं है, रोल ऑफ देम इन डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी घुसा सकते घुसा लो उसमें, बिकॉज एनसीसी है, गो डीप इनटू इट, आर्म फोर्सेस कंट्रीब्यूशन क्या है, गो ऑन देयर। ठीक है, यस। So what if we don't have anything to source? यू हैव नॉट प्लेड एनीथिंग, Like played at school level, nothing at match, like nothing worth match. लीव इट, पुट इट डैश। So pretty good. ठीक है, yes, that's okay. You justify कि yes I have played, okay, then last to probably कोई पूछेगा कि आपने कोई स्पोर्ट्स ही नहीं खेला, you lack physical activity, इससे ऐसा नहीं है सर। Then you mention school में I did this, I did that, but yes I have not been active, okay, pursuant of sports activities because I was more studies or whatever. ठीक है भाई, yes. Related prize and medals. In first, there are three prizes. First, that I have won second prize. Second prize at Technomania event at state level. IoT based project it was. So I ठीक can है, mention. बिल्कुल मेंशन करो। Sir, at the same, I have participated at university level. Same for face detection. छोड़ दो उसको, हाँ, या फिर उसको कोई प्रोजेक्ट में होगा वहां डाल दो, इंटरेस्ट में डाल दो। Okay. ठीक है, कि मेरा इंटरेस्ट है न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज लाइक फेस डिटेक्शन, पूछने दो वहां पर उसको। Sir, मैंने स्प्रेड इट, आइडिया ही सब में एक दो रखो और स्प्रेड करो। represented college at national level in forensic expo. ठीक है, ठीक है, Sir, in sports and NCC, not such particular in sport, but participated in NSS. I have just mentioned. ठीक है, फाइन, दैट्स ओके, एनएसएस पार्टिसिपेशन, दैट्स ऑल, ठीक है। हाँ, सर मैंने 12th में मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, तो नवोदय में 8 रीजन है, एक उसमें पटना रीजन है, हाँ, तो पटना रीजन का मैं रीजनल टॉपर रहा हूँ 12th में। प्लीज मेंशन इसमें बिहार, झारखंड और रीजनल टॉपर वेस्ट बंगाल इन क्लास 12, प्लीज, यस, 97.4 मार्क। बस उतना लिख सकते हो आप, डेफिनेटली। और एक था सर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारदानंद कॉलेज है, मैं तो केएमसी से हूँ, लेकिन सारदानंद कॉलेज में एक ज्योग्राफी क्विज हुआ था, तो उसमें मैं सेकंड रैंक लाया था। तो अवार्ड्स इन क्विज कंपटीशन, यू डोंट मेंशन डिटेल्स नहीं है कि अवार्ड इन क्विज कंपटीशन। सर उसका सर्टिफिकेट भी मांगा है, तो ठीक है, वो कुछ नहीं पूछता है। मैं कह रहा हूं ना, इस पेज के बेसिस पे आप क्वालिफाई नहीं करोगे। सर इस बार सर्टिफिकेट मांगा है, तो थोड़ा है, छोड़ दीजिए। नहीं मांगेगा सर्टिफिकेट, मांगता ही नहीं है। ठीक है, वो आप देखो यार, मैं कह रहा हूं ना, इस पेज के बेसिस पे, इस पेज का बेसिकली मकसद क्या है? द इंटेंशन इज नंबर 1 टू नो वेदर यू आर मल्टीफेसेटेड और नॉट, एंड समटाइम्स दिस बिकम्स अ वेरी गुड पॉइंट टू स्टार्ट इंटरव्यू, बिकॉज़ यू नो एज ए पैनलिस्ट आई विल वांट कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। यू शुड, आई वांट टू अप्रिशिएट योर गुड वर्क, दैट्स दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सर केएमसी में फेस्ट था, तो उसमें इवेंट मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट है मेरे पास, ठीक, इवेंट मैनेजमेंट, बस इवेंट मैनेजमेंट इन कॉलेज, और एक स्काउट गाइड कर लिया है, पिकअप ओनली 2, 4 में से कोई दो। सब में मैं कहूंगा सिर्फ 2 डालो मैक्सिमम। व्हाई? बिकॉज फिर दिखता है ना आपको। अगर सब में 4 भर दोगे एंड योर अदर क्वेश्चंस आर लैकिंग, देन तो ऐसे कोई पेज कोई फायदा ही नहीं है। यू वांट अदर क्वेश्चन वेरी वेरी गुड एंड समथिंग फ्रॉम हियर। दोनों बात सर, एक भी क्वेश्चन में से एक पेज पे एक भी नहीं पूछा। इंक्रीजिंगली आई एम सीइंग देम, दे आर आस्किंग मच फ्रॉम हियर। इसमें ज्यादा भीड़ मत करो, बिकॉज व्हाट हैपेंस, द मोर यू पंप हियर द मोर यू हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, द मोर यू एनरिच दिस वन, आपको हर एरिया में फिट। इससे अच्छा है कि आप उतना एनर्जी करंट अफेयर्स में डाल दो, अपने स्टेट में डालो, अपने प्रैक्टिस में डालो। व्हाई ट्रैप योरसेल्फ हियर? ठीक है, Sir, I have one bronze medal at the regional level faculty school debate, class 12 debates. प्लीज मेंशन दैट। But then I was thinking, will it give the panel more fodder points to corner me? अरे ये तो डरने वाला बात ही नहीं है बच्चे। सी, आई ऑलवेज मेंटेन दिस, इफ द पैनल इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टू यू एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू यू, इट मींस दे आर नॉट टेकिंग यू सीरियसली। सो अगर टॉपिक में फॉर्डर मिल रहा है, पूछने दो ना उनको। यू आर स्कैर्ड कि लिखूंगी तो मुझे पूछेगा और कॉर्नर कर देगा, मैं लिखूंगी नहीं तो क्या पूछेगा आपको?
आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, ओके, आप पापा का नाम क्या है, भाई का नाम, इतना पूछो तो खत्म है इसका इंटरव्यू. We will want that ask me difficult questions from my domain. Why quizzing? Why is it important? At what age you should do quizzing? How did you learn your quizzing? KBC के बारे में बोलो. Okay, talk about maybe go towards why are Indians doing good in international B? जो spelling B है. I can go. That's one lead for me, and I'm on. Like, why is India among the better ones in Olympiads, but math में नहीं कर पाता है, no, Chinese and Koreans take the award in, like, why उसमें? This is about debating. ठीक है, मैंने देखा कुछ वर्ड मुझे स्ट्राइक कर गया, I'm on. So don't get upset about कि they'll ask you difficult questions, or let them ask. My point is, if you fill up too many things here, then your preparation becomes too trapped here. Okay. This is like, I will put only one fact and I'll want him to ask me on that. वो one fact क्या होगा? I'll only put two facts and I want to engage with him for half an hour on those two facts. वो दो fact क्या होगा? That's why I'm saying limited. Okay? So prize, scholarship, or hobbies, for heaven's sake. Okay? You're no compulsion to fill hobbies here. अगर नहीं है तो बोल देना, sir, I had interests, but I did not pursue anything like a serious hobby. ठीक है, hobby का मतलब क्या होता है? Hobby is something that you engage in beyond your other regular expected commitments. ठीक है, अगर मेरा प्रोफेशन is say I'm a doctor, and if I say hobby is treating patient, it doesn't match. ठीक है, आपका ऑप्शनल फॉर एग्जाम्पल से सोशियोलॉजी है, मैं हॉबी इज लर्निंग अबाउट ट्राइब्स. इट लुक्स लाइक ना आपने स्मार्टली अपना हॉबी बना लिया है, बट हाँ, अगर जेन्युइनली यू रियली रीड अबाउट ट्राइब्स एंड नो अबाउट देम एंड ऑप्शन इज सोशियोलॉजी, देन मेंशन इट. सो वी वांट अ वेरी जेन्युइन आंसर हियर. व्हाट इज योर हॉबी? एंड हॉबी इसमें कि यू टेक लॉट ऑफ डिटेल्ड इंटरेस्ट. Hobby is not turning pages about something. I watch movies. वो hobby नहीं होगा. Hobby होगा when I can talk in depth about movies, script writing, screenplay. I can comment on dialogues. I can comment on art director. I can comment on probably editing. Like I can sit and discuss the different genres of movies. Then I'll say my hobby is movies. Just because I hum couple of songs the whole day, okay, doesn't mean my interest in songs. मैं singing करता ही नहीं, but my hobby is song. कैसे? I know about the lyrics, lyricists. I know about those poetry. I know about different genre of music. Like I can appreciate Indian classical. I can appreciate Western classical. I know about the history of music. Okay, then I'll say my hobbies. So you have to have a very detailed interest in an area which is beyond what is expected of you as a part of your professional commitments. That's a hobby. Otherwise, just mention interest in maybe whatever domain. और नहीं है तो blank कर देना, कोई इश्यूज नहीं. मुस्कुरा देना कि सर नहीं टाइम मिला, और क्या है सर, I was studying, वो कल्चर ही नहीं था सर, unfortunately, but given a time I would like to pursue a hobby in this, and I have heard sir मसूरी में कॉफी encourage करते हैं, they do. I would love, मेरा interest sir, I think I would like to get into photography. अभी टाइम मिला नहीं है, but I will definitely do it. Good enough. So you are under no obligation to bluff here. That's my point. Cooking as a hobby बोलते हो, और अरहर का दाल और चने का दाल डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो. Okay, it shows them. ठीक है, hobby cooking, you have made rice, दाल and चाय बना लेते हो. No, then hobby should be different. So I don't think this is the time for learning a hobby. वो किताब पढ़ के अगर आपने नहीं किया है, then you will be in a trap. Did you mention any hobby here? Playing badminton. You do it seriously? ठीक है, fine. Okay, but then why didn't you mention badminton in sports? Sports में डालो. Watching Bollywood movies, ठीक है, but you do it very sincerely. Okay. Not like you, sir. Not like me.
not like me, well, I do not know what you meant by that, but then you better see Bollywood movies. फिर तो आपका कश्मीर फाइल पे क्वेश्चन बनता है. Okay, बच्चन पांडे बन जाएगा, अक्षय कुमार तो शूटिंग नाउ जॉइन okay, some other type of वो बनेगा. मूवी इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हुआ कोविड का, वो भी बनेगा. Okay, so जब मूवीज कह रहे हो तो डू अ गुड डेफ. डोंट कीप इट सुपरफिशियल. यस. एक्टिंग इन थिएटर एंड कंपेयरिंग. लेकिन सर मुझसे किसी भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और जब भी इसमें पूछा जाता है सर आई डू वेरी वेल. कभी बोल देते हैं एक्टिंग करने को तो सर बहुत बढ़िया चला जाता है, सिक्सर लग जाता है उस पर, ऐसा हो जाता है. कंपेयरिंग को बोल देता है बहुत अच्छा होता है, लेकिन पूछा नहीं. तो सर मैंने इस बार जब फिल्म्स का फॉर्म भर रहा था तो सर वहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस का ऑप्शन आता है. सर मैं ऑल इंडिया रेडियो में एंकर रहा हूँ, तो इस बार मैंने उसको टेम्परेरी वहाँ बता दिया ये काम किया है. तो सर शायद वहाँ से जरूर पूछना उससे. बी रेडी. बट अगेन इस पेज के बेसिस पे आपको आईएएस नहीं बनाया जाएगा. Yes, और इस पेज के बेसिस पे आप रिजेक्ट भी नहीं होगे, इतना मान के चलो. आई नो समबडी, अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन बैक इन माई डेज, हिज हॉबी वॉज पोएट्री एंड शायरी. ठीक है. आफ्टर आई थिंक 5-10 मिनट्स के बाद में दे एंटर्ड इनटू पोएट्री एंड ही वाज रियली गुड. दे आस्क्ड हिम, ही केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट इट, फुल कंट्रोल. वो कहते हैं ना, वो महफिल हो गया था. ठीक है. He got pathetic marks. Then he realized कि यार मैंने I doing good in that and they not asking me other aspects. Probably पहले 5-10 मिनट they had made up their mind कि यार ये IAS के लायक नहीं है, अब आया है तो कोई एंटरटेन हो जाते हैं. चलो बेसिकली आप एंटरटेन कर रहे थे हम. ठीक है. सो रिमेंबर दिस. सर मैं इसमें से कुछ हटा दिया. मैं कहना 1 या 2 रखो. दिस इज वेरी गुड. एक्टिंग एज हॉबी इज गुड. ओके. कंपेयरिंग इज ऑल्सो गुड. फाइन. तो 2 लेके छोड़ दो. बट इस पे अपना दम मत तोड़ देना पूरा कि जो भरे हो देन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर इट, बिकॉज द लॉट ऑफ लीड क्वेश्चंस फ्रॉम हियर which will test. Say, I'm testing your personality. I'm testing you as a person, your biases, your prejudice, your understanding test करना. Like if I ask you, Kapil, आपका acting as a hobby है, then can I say actors generally are not true to themselves because they keep on putting on roles according to scripts. What do you think? Yes, sir, that can be one perspective. सोच के बोलना है इसको. I'm not saying I want an answer from you right now. But इस आंसर के बेसिस पे I will know lot of things about you. Basically I'm questioning कि are you hypocrite? एक्ट कर लेते हो तो जहां टाइम मिलेगा आप वहां दुखी भी हो जाओगे. पलट जाओगे तो आप हंस भी दोगे, पलट जाओगे तो सीरियस भी हो जाओगे. मैंने आप क्या हो इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क. इज व्हाट आई एम आस्किंग. Sir, I think an actor becomes very sensitive. Think about the answer. So hobby के basis पे go deep, mention less. Don't flood your page with too many things. एक दो अगर नहीं है, strike off, nothing to lose. Yes. एक मिनट में कोई questions हैं ऑनलाइन से? Means if I am not mentioning hobbies and I am mentioning extracurricular activities, for example, I have been part of women development cell DLLE, so I can mention. Yes. So I can बिल्कुल. leave तो it. थोड़ा सा briefly 2-3 वर्ड में hit it. Yes. No, sir, in a hobbies I can write not in particular in any such, but I should leave blank. नहीं लिखो ना, किए हो ना, talk about it. I want areas where I can ask you questions. Blank छोड़ तो कुछ नहीं पूछूंगा. I participated in NGOs working for women development. Active participant in NGOs in women development. Something that makes sense to me. और फिर पूछूंगा क्या किया बताओ भाई. कौन? ठीक है. So that's about this. Leadership, same thing. Okay, ठीक है. 1-2 लिखा है, fine, good enough, no problem. That makes sense. इसके बाद आई थिंक जॉब एक्सपीरियंस से पूछता है क्या? नहीं पूछता ना इससे. DAF-1 में अब जो भर दिया आपने, ठीक है, उसका कुछ करना नहीं है. बट
पढ़ के जाना उसके बारे में, वो क्या रोल था, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट इज एक्साइटिंग, नॉट एक्साइटिंग, विल यू कंटिन्यू दैट जॉब अगर नहीं होता है, या यू नो हाउ यू एज ए यू नो एस्पिरेंट जो भी है, हाउ इज हेल्पिंग इन दैट जॉब. सो प्रिपेयर वेल, नो अबाउट योर सैलरी वैलरी जो भी है फिलहाल. ठीक है. हाँ, व्हाट अबाउट इट. क्वेश्चंस तो आप फॉर्म तो फिलअप कर लो. एनीथिंग दे कैन आस्क यू, कॉलेज इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स में पूछ सकता है. ठीक है, दैट कम्स लेटर. माय पॉइंट वाज फिल अप योर फॉर्म ऑनेस्टली. ठीक है. एंड एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू एड्रेस? बताओ. एनीथिंग? सर कंप्लेंट नंबर बोलने का प्रैक्टिस. जितने बार बोलोगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आप फेस कर लोगे, जितने वैरायटी के क्वेश्चंस आप सोच पाओगे. होता क्या है ना, सी यू विल हैव टू गो डीप डाइव इनटू द टॉपिक्स एंड द आंसर शुड कम फ्रॉम you actually having thought about something almost at the level of experience. मतलब, for example, where are you from? Bihar. So I ask you कि why do you think despite a very long history of being the political fulcrum of India, in some ways also the cultural center of India, why is Bihar not among the most developed and forward states? अब इस आंसर में ना आपका एंग्विश दिखना चाहिए, आपका कंसर्न दिखना चाहिए. या तो डिसमिस कर दो कि नहीं ऐसा भी नहीं है सर, वी आर डूइंग वेरी वेल, एवरी स्टेट हैज प्रॉब्लम, वी आल्सो हैव प्रॉब्लम, द गुड पार्ट्स एंड बैड पार्ट्स आल्सो, एंड वी हैव गिवन सो मेनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो बहुत कंट्रीब्यूशन है. आपने बेसिकली क्वेश्चन को रफा दफा कर दिया कि बकवास कर रहे हो, चुपचाप. या फिर यू कैन से यस इट्स मैटर ऑफ कंसर्न. माने आपका वो जेन्युइन फीलिंग आना चाहिए इस आंसर, एंड इट शुड लुक लाइक यू हैव थॉट अबाउट दिस. मींस योर आंसर मस्ट हैव एन एलिमेंट ऑफ सम पर्सनल टच ऑल्सो. देखिए सर, आई हैव सीन द प्रॉब्लम लाइज इन XYZ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही सर दिस आर द प्रॉब्लम्स. I was in that school and I have seen हमारे स्कूल में ये इश्यूज हैं. Where were you schooling from? हाँ, बिहार से ही. अच्छा, हाँ, फिर आगे लवली पॉइंट मिल गया. सर मैंने I have studied in Bihar and also Delhi, and I've seen sir the different type of cultures that come from different states. यहीं पर कंपैरिजन का तुम्हारा पूरा बना हुआ है. You have added an element of personalization. सर बिहार से बच्चे आते हैं, they come with this lack of opportunity or this type of education system. हमें सर एक साल लग जाता है to adjust to the different culture in Delhi, and that's primarily because of the education quality that we have there. Honestly बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है. क्वेश्चन का सर ऐसे बोलूंगा, ऐसा तो नहीं है कि आई एम अगेंस्ट बिहार. अरे मैं पूछ रहा हूं बिहार का प्रॉब्लम बताओ, अगेंस्ट बिहार कैसे हो जाओगे? So I was a very good student, मैं रीजनल टॉपर रहा हूं, नवोदय स्कूल से रहा हूं. When I came Delhi, I'm 100% तुम्हारी दिक्कत हुई होगी पहले 5-6 महीना 1 साल से. नहीं, when you came to Delhi, did you have a problem adjusting here for a couple of months or no? वही बोलो ना. So you have added a personal dimension to it. सर बिहार का भी एग्रीकल्चर बेस है, हरियाणा का भी एग्रीकल्चर बेस है सर. लेकिन जो हरियाणा में डेवलपमेंट हुआ है, इट ऑलवेज एंग्विश फॉर मी. सर बिहार में वैसे कर नहीं पाए. कंपेयर कर लो, डेटा कंपेयर कर लो. ठीक है, वही कह सकते हो ना. द पॉइंट इज योर आंसर शुड नॉट कम फ्रॉम अ मैकेनिकल बुकिश आंसर. आप ऐसा आंसर मत दो जो कि स्टूडेंट फ्रॉम केरला भी देगा आंसर. आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, व्हाई बिहार नॉट डेवलप्ड? सर बिहार हैज दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज नहीं. मैं वही बोलूंगा ना. You from Bihar who has lived there
व्हाट इज योर इनसाइट, अब बताओ ना। यू ऑल गॉट द पॉइंट हियर। तो ये चीज ना आपको पढ़ना होगा, ये मॉक में नहीं बता सकते आप। ओके, nobody can teach this to you till you have sat down and thought about it. You're from which part of Bihar? कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो आप? अच्छा, छपरा, ठीक है। आई थिंक द मोर डेवलप्ड पार्ट ऑफ बिहार इज टुवर्ड्स गया वगैरह, पटना भी है फॉर दैट मैटर, उस पार्ट है। आप तो दूर हो जाता है इधर पे, ईस्टर्न, हाँ वेस्ट में, सॉरी, यस, ठीक है। सो वहीं पर कंपेयर कर दो ना सर। So you need to do lot of in-depth study of your districts, in-depth study of your economy, and then say ये problems. And मैं बोलूंगा कि this question should have anticipated. ठीक है, और सब नंबर गा दो फिर। However ऐड करके कि लास्ट 5 साल में बहुत चेंज हुआ है, 10 साल में बहुत, इनफैक्ट ग्रोथ रेट्स में अमंग द फास्टर ग्रोइंग स्टेट्स है। ये अलग बात है कि इतना बेस खराब है तो जो भी होगा तो वो पॉजिटिव होगा ना, तो हाँ से बोल देना, बट फिर भी हो रहा है ना भाई, एक्नॉलेज दैट। ठीक है, योर आंसर मस्ट हैव दैट सेंस ऑफ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन आंसर। जैसे कि यूएस का रोल इन दिस यूक्रेन क्राइसिस, इसमें भी कैन गेट इन्वॉल्व एट पर्सनल लेवल, एटलीस्ट शो योर एंग्विश। क्या लोग मर रहे हैं, बॉम्बिंग स्कूल का कर दिया, बॉम्बिंग सिविलियन एरिया का कर दिया, ठीक है, और इतने आराम से कर पा रहे हैं। एंटायर नेटो इज ओनली टॉकिंग एंड सैंक्शंस क्या है, कोरिया को बंद कर दिया क्या आपने? ईरान का कुछ क्या कर पाए आप लोग? सैंक्शन तो कर रहे हो आप लोग। तो एटलीस्ट हैव दैट इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कि सर दिस इज टेरिबल, 21st सेंचुरी में दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल, is a failure of the pura global community. We didn't anticipate this and we could not stop it in time. And now it has happened. 1 महीना हो गया यार, हो रहा है वाला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके वॉइस में दिखना तो चाहिए कि यार कंसर्न अबाउट, कि लगता है कि बहुत दूर वॉर है, इसका रिपरकशन दिखाई देगा तुम्हें 2-3 साल के अंदर। So your answer has to come with that level of पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, और वो जब ही होगा व्हेन यू रीड एट दैट डेप्थ। अदरवाइज तो मैकेनिकल एक क्विज टाइप में चलेगा, दैट नॉट मेक मच सेंस। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? नितीश, plays cricket and swims in the local pond, but can he mention it in the DAF also? Yes. स्विमिंग एंड क्रिकेट, दैट्स ऑल। ठीक है, बट उसको फिर एज ए पार्ट ऑफ अचीवमेंट नहीं लिखेगा। ओके, स्पोर्ट्स, ओके, यू कैन ऑल जस्टिफाई इट, नो प्रॉब्लम। यस, सो आई थिंक वी आर डन विद द डैफ पार्ट मोर और लेस। ठीक है, सो आप डैफ फिलअप कर लीजिए। मे बी इफ यू वांट टू मीट मी after the DAF fill up, we can arrange for some sessions. Okay, depend on the availability. Keep in touch. Let us know what you need. Interview preparation को structure preparation करना मुश्किल है. Why? Because individual needs are different. And even if it's done one-to-one, there's no guarantee I can actually train you without you working on your own. And what I would want is, even if I do one-to-one, let the others also sit and watch. I'm talking to him, others can engage. Yes. 3 चीज, एक तो all the general aspects of geography which a common man is interested about. Common man न्यूज में क्या क्या सुन रहा है, अर्थक्वेक हो गया, अब पोलर वोर्टेक्स सभी जानता है, एवरीबडी नोज समथिंग कॉल्ड एज हीट वेव्स हो गया। ठीक है, अब हीट वेव चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लो, हीट वेव क्यों हुआ है, मॉनसून क्या है। सो एज ए सिलेबस खोलो, जो वर्ड यू थिंक अ कॉमन मैन विदाउट ज्योग्राफी बैकग्राउंड विल बी क्यूरियस अबाउट, उस पर थोड़ा देख लेना, विच आई डोंट थिंक विल टेक टू मच ऑफ टाइम। 1 नंबर 2, विच इंक्लूड्स टेक्टोनिक्स क्या है, कॉन्टिनेंट्स कैसे मूव करते हैं, कब एक्सटिंक्शन हुआ था,
what is supercontinent, ये सब चीज वेगनर, everybody knows about वेगनर, उल्टा लो. Okay, that's one thing you study in geography. Second thing, do a good study of regional development and relate it to your state. Okay, regional development, trade aspects of your state. Because when they ask you कि geography तुमने क्या सीखा है and why geography, that is the more important question. To justify why geography and what क्या सीखा है, development बोलना पड़ेगा, and then the question will start from there. ठीक है? Geography है तो थोड़ा सा अपना एरिया और इंपॉर्टेंस मैप्स का आइडिया कर लो, खासकर ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. ओके, मैप बेसिस पे आइडिया होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं नो फ्लाई जोन ओवर अफगानिस्तान करता हूं, तो विच कंट्री आई कांट रीच फ्रॉम इंडिया डायरेक्टली. ओके, इफ यूक्रेन बिकम्स नो फ्लाई जोन and I want to take a flight to say Moscow from France, which country will I pass above? थोड़ा सा एक visual perspective होना चाहिए based on some current affair developments. ठीक है? So one is, I said, all the terms which you can be curious about. Number 2, development जान लो, और थोड़ा pictorial India का, खासकर those people who have travel as a hobby, they better know the maps really well. How to go north, south, किस स्टेट में पास करोगे, किस सिटी से पास कर जाओगे, एक पिक्चर आइडिया होना चाहिए. That's all. सवाल पूछा, what do you think is more important, history or geography? And you cannot say both. You have to choose one. So I chose geography. Give my reason. ठीक है, fair enough. इसमें राइट रॉन्ग आंसर नहीं है. इट्स अबाउट कहने के बाद में हाउ डू जस्टिफाई इट. गुड 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 क्वेश्चन एंड वेल आंसर्ड. ठीक है, नो प्रॉब्लम. नो, यस यू कैन. यस, सर मैं मेंस में तो मीडियम इंग्लिश था, लेकिन इंटरव्यू में हिंदी है. बिल्कुल हिंदी में. अब फिर अब पूरा प्रैक्टिस करो हिंदी में. वो तो क्यों पूछेगा? बी ऑनेस्ट देयर. क्यों रखा हिंदी बोर्ड में? वही बोलो और क्या. सर आई कम फ्रॉम बिहार. और आपका माध्यम क्या था स्कूल में, इंग्लिश की हिंदी? स्कूल में तो हिंदी था, 12th बाद मैंने पूरा इंग्लिश किया. ठीक है, बोला कि स्कूल में सर हिंदी था, और कहीं ना कहीं सर वो हिंदी, हाँ हिंदी सर मैं कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा, आई कैन एक्सप्रेस बेटर. हालांकि एजुकेशन हायर इंग्लिश में हुआ था. आई थॉट कि पर्सनैलिटी टेस्ट में हिंदी विल बी अ गुड मीडियम टू एक्सचेंज एंड डिस्कस. तो इसको पूरा अच्छी हिंदी में बोलना. नहीं मतलब कंपल्सरी नहीं. Yes, take it. कंपल्सरी नहीं है, हिंदी में. ठीक, और वो मतलब ज्यादा हिंदी सीखो. ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. दे नॉट कट मार्क्स और ऐड मार्क्स. ठीक, फाइन. बी ऑनेस्ट देयर. बी ऑनेस्ट. फिर क्वेश्चन चला जाएगा वर्नाकुलर के बारे में क्या सोचते हो, हिंदी नेशनल लैंग्वेज क्या सोचते हो, नॉर्थ साइड डिवाइड के बारे में सोचते हो, इंग्लिश. फिर अलग टाइप के क्वेश्चन बच जाएंगे तुम्हारे. उस पर प्रिपेयर करना, नॉट दिस वन. हिंदी का रोल क्या रहा है नेशनल मूवमेंट में, डू यू थिंक द्रविडियन मूवमेंट इज एंटी हिंदी और नॉट. क्वेश्चन उधर चला जाएगा. पर so not this question. I am more concerned about ki what are the lead questions, because see, when you're preparing, you prepare on a theme and not a question. The theme called language and Hindi, वो important है, उससे सारा related prepare. Not that sir इस question का answer क्या होगा, that's a wrong preparation. Because every question will come with some sub questions or next set of questions. वो anticipate करो. ठीक है? Yes. So by taking current affair, what problem I face is sir, I can't think the question different type of dimension. That means if I am reading magazine, You have not exposed yourself to that range of questions. so I am just stick to that. I think, magazine. in fact, we have a session tomorrow, I think. 8 o'clock. So I'm going live. Zoom link दे देना इन लोग. Okay. On Wednesdays, I will take the sessions. Mondays and Sundays कोई और लेंगे session. 8 से 9, 9 से 10, जितने देर बैठना बैठ जाना हमारे साथ. So I'll take up one topic and start discussing it. ठीक है?
सो ये जूम में रहेगा, यू ऑल गेट द लिंक्स, यू कैन ज्वाइन, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया, जितना मैं क्वेश्चन बम्बार्ड करूंगा आपके ऊपर ना, उतना आप सीख पाओ। ठीक, कल नहीं परसों है ना, 23rd हाँ परसों वेडनेसडे है मेरा। इनको स्केड्यूल बना के दे देते हैं, किस दिन क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, गिव देम अ स्केड्यूल, ठीक है। एंड आई विल बी देयर फॉर पर्सनल आल्सो, आप लोग यहां मिलना चाहो या नोएडा, व्हाटएवर यू वांट, यू नो, कम इन। आई थिंक वी आर डन नाउ, ओके, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। सो ऑल द बेस्ट, ओके, whoever is watching and otherwise also recording जो भी देखेंगे, all the best, don't give up, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, what is your, सर जो मैंने तो इंग्लिश में दिया है, तो ज्योग्राफी का जो स्पेसिफिक टर्म है वो तो मैं इंग्लिश वाला यूज कर सकता हूँ, जो टर्म कुछ टेक्निकल टर्म। हिंदी पता है या नहीं पता है? नहीं सर, नहीं, ज्योग्राफी के टर्म्स हिंदी में पता है कि नहीं? बोल देना इंग्लिश में, इतना कॉन्शियस मत हो, बट डोंट लुक लाइक कि यू आर नॉट टॉकिंग हिंदी, थोड़ा सा शुद्ध रखना, अंदेश देश से कि नहीं इतना नहीं बोलो यार, कम करो तो कर दे, ठीक है। बेसिकली बी जेन्युइन दे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, डू योर बेस्ट एंड वी आर देयर। It is the time you should overdo the preparation here. Okay, इस बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ो, whatever it takes. And one suggestion is कि आप लोग इंटरव्यू जिस कपड़े में जाने वाले हो, whatever you put on, okay, make sure that you have 2 sets with you and start getting used to that. Okay, वही पहन के घूमो, वही पहन के do your work, so that you know interview board में you are not uncomfortable in what you are putting on. होता है सम ऑफ देम बाय न्यू शू और जूता फिट नहीं हो रहा है और उसी दिन लगड़ा रहे हो, सो यू डू नॉट नो हाउ टू कैरी योरसेल्फ इन अ टाई एंड देन यू आर ऑल ओवर द प्लेस, वी डोंट वांट दैट, ठीक है। सो गेट यूज्ड टू इट। लास्ट टाइम के इंटरव्यू जब मैंने दिया था तब भी नहीं था, सूट पहन गया था, इस बार तो पूरा नहीं, तो शर्ट और ट्राउजर, दैट्स ऑल। व्हाई डू यू हैव टू बी अंडर प्रेशर, नॉट रिक्वायर्ड। आई नो ऑफ इंटरव्यूज ऑल्सो बच्चों ने हाफ स्लीव्स में दिया है, दैट्स ओके, इट डजंट ऑलवेज हैज टू बी फुल स्लीव। आप कंफर्टेबल हो, दैट्स इट, नाइस, डिसेंट, वेल प्रेजेंटेबल, दैट्स ऑल, ओके, लुक प्रेजेंटेबल, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच, ओके, लेट अस नो व्हाटएवर यू नीड। आपका टेलीग्राम ग्रुप भी है, इंटरैक्ट, 4-5 लोग हैं उसमें, यू कैन ऑलवेज रीच आउट and convey whatever you have to convey to me. ठीक, चलो, thanks a lot, thank you so much.